So let us see how we can manipulate with the date functions. So the very first thing is that if you want the to bring what today's date, then we will straight away write today function. Okay, today likhna, double quotes open and close karna, double quotes sorry, bracket open and close karna, and then press enter. And what you will get the current date. Okay, समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, if you want the date with the time also, then use the now function. So when you use the now function, it will give you the current date and time as well. Clear? Now, the thing with this today function is now function is that it will be updated automatically. It means if I just press enter after 2 seconds, the date will change. ठीक है, अभी जैसे ये 10:35 है ना, it will change to 10:36. It will update itself. See, अगर मैं यहाँ पे delete button press करता हूँ तो देखो update हो गया ना, समझ में आया? So these two functions, what will they do? They will just update themselves. समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो यूज वाइजली. अगर आप कहीं पे फिक्स डेट चाहते हो देन डोंट यूज दिस टुडे एंड नाउ फंक्शन. उस समय आपको स्ट्रेट अवे डायरेक्टली आपको टाइप करना चाहिए. समझ में आया? नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट डे जब भी आप ओपन करोगे ये डेट चेंज हो जाएगा, 28 बन जाएगा आपका 29 और जो भी उस दिन का डेट होगा. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मुझे पार्टिसिपेंट लिस्ट ओपन करने दो. ओके फाइन. Vamsi Krishna Aishwarya. Okay, fine. So, like if I'm having a date, and what if I want to add days to this date? अगर मुझे 5 दिन और add करना है, sorry, I'm not going to add. What I want? Okay. So what I want, if I'm having a date. Now what I want the day number. ठीक है, ये जो 4 है ना, मुझे अगर इस date से अलग करना है, तो what I will do, I'll straight away write day function, select the date, close the bracket, and then press enter. What it will give? It will give you the date. समझ में आया? Similarly, if you want month, then straight away type month. आप select करो date को, then press enter. It will give you the month. Similarly for the year, ठीक है? These are very simple functions. तो ये आपको year दे देगा. समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक है. अब मान लो कि somewhere it is written like you have written some dates like आज का 28 and somewhere you have written month. ठीक है? And somewhere you have written what? The year. And what you want to convert these 3 columns into a date. So what you will do, you will use a date function. आप date function लिखना, straight away it will ask, see what it will ask. यहाँ पे देखो, जैसे आप date function करोगे, सबसे पहले बोलेगा year दो, month दो, and then day दो. तो आप क्या करना, select the year first, then the month, and then the day. Close the bracket, then press enter. It will convert that 3 columns into a date. Clear, Funda? Yes, sir. Okay. Now, similarly, if I want to add the days to this डेट तो हम कैसे करेंगे, स्ट्रेट अवे आप क्या करो, डेट को सिलेक्ट करो प्लस द नंबर ऑफ डेज यू वांट टू ऐड. इफ यू वांट टू ऐड 5 days to it, प्लस 5 एंड देन सी इट विल बी एडेड टू दिस. देखो ये 4 तारीख था, अब ये 9 तारीख बन गया. समझ में आया? ठीक है ना? Yes, yes, sir. Similarly, see, I will select this date plus हम करते हैं इस सेल का एड्रेस हम दे देते हैं. So now what will happen? Now if I'm adding 10 to this, so 10 days will be added, and if I'm subtracting to this, see -5 करते हैं तो -5 हो जाएगा. तो this way what you can do, you can add the dates. Clear? Sir, once you again explain. Once again, ना? Okay. फंडा समझ में आया what it is doing? What we are going to do is we are just going to add the days to the date. ठीक है? Like ये 4 है, 2 है, 2019 है, and what you want to add 10 days to it. तो आप क्या करोगे, straight away select the date, then plus आप उसे नंबर से ऐड कर दो, तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. तो rather than last time मैंने क्या किया था, rather than giving the number, what I gave this address, so that यहाँ पे जो भी मैं डेट दूंगा, नंबर ऑफ डेज दूंगा, वो वहां पे चेंज हो जाएगा. ठीक है? हाँ सर. माइनस में करेगा तो वो माइनस भी हो जाएगा. देखो, समझ में आया ना? हाँ सर. Okay. Now, similarly, what if we want to add the months to the date? So for that, we need to use a function. So in this case, I will use the eDate function. Select the date, comma, and then number of months you want to add or subtract. समझ में आया? And then press enter. Clear है फंडा? See. Yes, sir. 2 था तो देखो अब 7 हो गया. Date and year is same, but what it is going to do? It is just आपका months को आगे बढ़ा रहा है. समझ में आया? Similarly, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 12 months को आगे बढ़ा देता तो so what will happen?
देखो यहाँ पे ईयर भी मेरा चेंज हो गया ना, बिकॉज एडिंग 12 months टू दिस डेट विल बी गिवन। समझ में आया? Yes, sir. Now, we do not have any dedicated function for adding the years. So what we need to do is we need to convert the years into months. तो year को month में कैसे convert करते हैं ये बताओ आप? How to convert year into month? Anybody? Krishna, what do you say? Divide by 12, sir. Divide or multiply? So 1 year is 12 months, no, sir. हाँ, तो अगर 5 years है तो if I want to convert this 5 year into into 12, month, 5 into 12 करेंगे ना? Yes, sir. 60. सेम चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। We will use the same e-date function. ठीक है, सिर्फ years को बढ़ाना है तो what I will do? I will just multiply it with 12. समझ में आया? तो जितना भी year देंगे वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, दिख रहा है? Now the year is changing. Clear? Is this function clear? Yes, sir. Manisha, Pooja? Yes, sir. Thank you, pardon, sir. Pardon, 1 second. Okay. Now, this is clear or not? Like if you want to convert any year into months, what we need to do is we need to multiply it with 12. ये clear है फंडा? हाँ sir. हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे months करते थे ना, ठीक है? तो months कितना हो जाता है 12. अब उतना इंटू हम कितना कर देंगे जितना भी मेरे को ईयर बढ़ाना है। समझ में आया? हाँ sir. अब 10 years बढ़ गया, देखो 19 था तो 29 हो गया। तो आई वांट टू जस्ट 5 करते हैं तो 24 हो गया। समझ में आया ना? हाँ sir. So this is year. Okay, यहाँ तक क्लियर है? हाँ sir. Okay, thank you Pranay. Okay, similarly we have one more function and that is known as EO month. EO month का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? What could be the full form of EO month? EO का full form क्या हो सकता है? EO का full form होता है end of. समझ में आया? So Yes, EO month का full form क्या हो गया? End of month. तो यहाँ पे हमें क्या करना, लाइक आज का डेट हम लोग करते हैं, ठीक है? सो EO month. So start date is today. अगर हम आज का डेट देते हैं and what I want to see, I want to see the last date of this month. तो हम क्या करेंगे? 0 प्रेस करेंगे and then I will press enter. यहाँ पे नंबर्स दे दिया. So what I need to do, I just need to convert it into a date. तो यहाँ पे देख रहे हो आप 31/12/2020 दे दिया ना? Yes sir. Similarly, if you want to see the end date of the next month, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 10 के जगह पे 1 कर दोगे। समझ में आया? Now see, 31/1/2021 is the last date of next month. Is it clear? Yes sir. Similarly, आप यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी दे दो, accordingly वो उतना months का end of the date दे देगा। ठीक है? Yes sir. ये फंक्शन किसी को कोई प्रॉब्लम या फिर से बताओ? No problem. Okay, so this is a very simple functions that we can use. ठीक है, date functions.